अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहिम आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं लीनियर वेक्टर स्पेस इन क्वांटम मैकेनिक्स। और हम डिस्कस करेंगे रूल्स फॉर एडिशन एंड रूल्स फॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन फॉर लीनियर वेक्टर स्पेस। तो सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं व्हाट इज मीन बाय लीनियर वेक्टर स्पेस। अ स्पेस विच कंसिस्ट ऑफ टू सेट्स. First one, the set of wave function psi, theta, phi, gamma and eta and so on, and the set of eigenvalues a, b, c and so on. Also follow the rules for addition and scalar multiplication. So students, rules for addition: if psi, theta, phi is the number of linear vector space, then psi plus phi also number of linear vector space. Second one, commutative property due to addition exists, means phi plus psi is equal to psi plus phi. Associative property due to addition also exists. Psi plus bracket into phi plus theta is equal to psi plus phi bracket plus theta. Also additive identity exists, means phi plus 0 is equal to 0 plus phi is equal to phi. Also additive inverse exists, means psi plus minus psi is equal to minus psi plus psi, which means 0. And rules for scalar multiplication given below: if psi, phi are the member of linear vector space, then their linear combinations mean eigenvalue a into psi plus eigenvalue b into psi, also member of linear vector space. Distribution property also exists with respect to addition. तो देखें a into psi plus phi is equal to a psi plus a phi. Third one, student, associative property with respect to scalar multiplication exists. A into b into psi is equal to ab bracket into psi. Also exists a unitary scalar I identity into psi is equal to psi into identity is equal to psi. ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।